Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk with the change makers, the people who are making a strong impact on the society. With me, Himanshu Tyagi. रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि वक्त जरूर बदलता है। She is the very graceful and elegant, determined and motivational, highly inspirational Captain Sunana Singh. मोर पीपल मुझे ऐसे लगता है जो चीजें किताबों से नहीं सीखी जा रही इफ आई एम एबल टू हेल्प समवन विद माय ओन एक्सपीरियंसेस सो व्हाई नॉट टू शेयर विद दैट ना All it's right. all about raising awareness and inspiring the young crowd, the young generation to live life extraordinary by joining defense services. Basically my aim is to give them the right information and guidance so that they can build their career. तो डू यू थिंक कि 12th के बाद में एक साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना मैंडेट हो जाना चाहिए, या शैल इट बी पुट इनटू I will कंसिडरेशन? not say एक साल कुछ नहीं होता मतलब हिमांशु बट ट्रेनिंग शुड बी देयर सो फर्स्ट चैलेंज वाज द डिसीजन ओनली leaving behind my uniform. So when my son was born, Himanshu, my priorities completely shifted, and my mother instinct overpowered everything in my life. आप फौज छोड़ देते हो, फौज आपको कभी नहीं छोड़ती है, ये आपके साथ हमेशा रहती है, तो it stayed with me. फोकस रहना बहुत जरूरी है उन पे, you let it be in your conscious mind always. Am I audible? Absolutely clear, and the visibility is also wonderful, and you're looking very charming and very graceful. The smile itself Wow. is Let's something start that I with a wanted to positive. Thank you mention. so much. Thank you so much. So kind of you. It's such a pleasure that you've taken out time for us today. We wanted to connect नहीं, with you. Himanshu, pleasure is all mine, बेटा. ठीक है, you are giving me this opportunities. I think I'm working on this mission to reach more people. मुझे ऐसे लगता है जो चीजें किताबों से नहीं सीखी जा रही, if I'm able to help someone with my own experiences, so why not to share with that, ना? Because बहुत मुश्किल से मिलता है मौका when you can give back to the society also. So you are giving me an opportunity to reach to more people. So thank you for that. Ma'am, good people attract good people. Hi, that's so sweet of you. And I do believe in that. I also, I also. All right, so let's start with what are you currently doing and how is life going? So currently I'm working in, I'm teaching sports psychology at Sports Mhm. University of Haryana. So it's a first sports university. It's a new government project of Haryana government because you can see for past results also in Haryana sports is coming up Right. at a very good level. So they have just started this year only with a new project. So I'm in the raising team of that university. So I teach sports psychologist over there. I work as a sports psychologist, and I completely enjoying, these are the young students coming from the rural Haryana. So basically, I'm helping them both in academics also and their participation in sports also. Apart from that, outside of my this teaching role, I'm also very passionately involved in my own project, and I call it as a mission join Indian Army. All It's right. all about raising awareness and Mhm. inspiring the young crowd, the young generation to live life extraordinary by joining defense services. My this project is especially for the students in rural India, Mhm. because I think I have noticed that a lot of talent lie in rural India, but many young students, they lack guidance and the opportunities. So I'm just helping them to pursue their dreams. So I'm reaching to different schools and different colleges through my workshops, through my motivational talks. Basically, my aim is to give them the right information and guidance so that they can build their career. So ये मेरा थोड़ा सा काम अभी चल रहा है. बहुत बेहतरीन काम चल रहा है मैम। मैम, Thank you. आपने ये बताया तो इससे एक इमीडिएट क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ रहा है। बिकॉज यू आर वर्किंग इन द रूरल एरिया एंड स्टूडेंट काउंसलिंग भी कर रहे हैं आप, एंड यू आर हेल्पिंग देम एंटर दैट फॉर द आर्मी एंड एज वेल। तो डू यू थिंक कि 12th के बाद में एक साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना मैंडेट हो जाना चाहिए, या शैल इट बी पुट इनटू I will कंसिडरेशन? not say.
एक साल कुछ नहीं होता, मतलब हिमांशु, बट ट्रेनिंग शुड बी देयर बिकॉज आई एम Right. टेलिंग यू, I think this organization is doing so well because first is because of their training, and training at every stage of their career. इट इज Right. जस्ट नॉट कि आप अकेडमी में जाते हो और उसके बाद आप देखो, जब यू आर इन अकेडमी, सो दे ट्रेन यू फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग, मेकिंग एंड एवरीथिंग, बट ट्रेनिंग वहां बंद नहीं होती है. दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप एंड योर लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर दैट, एंड देयर आर न्यू challenges which keep on coming in throughout your life. So army trains you for that at every stage of your career. So Mm. complete army training, I think, अगर हम मैंडेटरी नहीं भी कर सकते तो बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है शुड टेक देयर ट्रेनिंग मॉड्यूल एज अ एक बेसिक्स जिसको हम फॉलो कर सके ना, वो लेके चलना चाहिए बहुत सारी. अब आप एजुकेशनल फील्ड के अंदर भी कर सकते हो, आप कोई भी है, आप पुलिस जितनी भी हैं, आई थिंक बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन कर पा रही है बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. Right. All right. That's wonderful. So, you transitioned from military to academics, which is a big change. What was the most challenging and at the same time most rewarding aspect of this particular transition? uh, any transition is not easy. So it Right. was quite a shift for me. So first challenge was the decision only. Mm. Leaving behind my uniform. So when my son was born, Himanshu, my priorities completely shifted, and my mother instinct overpowered everything in my life. And we all know, army is Mm. a 24 into 7 job. It's a full commitment, and Mm. so is motherhood, both Right. 24 into 7 job. And I had to make a choice between my career and being there for my child. Also, my husband is also an army officer, Mm. so that was Lovely. another thing. We both were due for our field posting. Mm. So looking at all other things, आप हर चीज हर पहलू को देखते हो, so that was the decision I took it. And I think it was very important for me also because um, initially developing that emotional bond with your child is also very, very important. Right. And Pradeep is from NDA background, and in my time there was no permanent commission given to the women officers Mm. at that time. So Mm. 14 साल बाद छोड़ना था या 5 साल बाद, so I took the decision this. So this was my first challenge. फिर सब कुछ सोच के I took it. Another challenge I faced was, adapting to a life as an army wife, because all of the sudden your identity changed, and my identity changed from Captain Sunana to Mrs. So and so, which was not easy at all. Fauji banna, I think, if you ask me, comparatively is easier because I was trained for that. I was trained to take all the challenges. Right. Forge trained me for that. But there is no formal training for becoming a Fauji wife. And Correct. imagine, Right. to all the, this is, my heart goes for all the young girls who get married to Faujis. You are loving a person who loves his country and men more than you. You are at number And three. that's Say, so when I was difficult wearing, to accept. yeah, I was wearing a uniform. For me, it was very, your country comes first, then the men you command, you yourself at the third. But आप किसी और से इतना प्यार करें और उसकी नंबर 3 लिस्ट पे हो, तो वो थोड़ा इजी नहीं होता है. It becomes difficult most of the time. All the army wives, that's why they are the strong, they are the strongest pillar. फौज में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी अलग नहीं होती है, because Mm. most, it's a women edition, most of the girls, they end up taking all the roles, being a single mother, packing their, moving their house, every second field, and then helping the families also of the soldiers. They play such an important role, and then giving that emotional support to your husband. ये बहुत Mm. जरूरी है, पता है. सो दैट वाज मोर चैलेंजिंग बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, जब जंग पे कोई भी सोल्जर जाता है या किसी ऑपरेशन पे कोई भी सोल्जर जाता है,
दे आर इन प्रेजेंट, उनका पूरा फोकस उस ऑपरेशन पे होता है, बट समवन वेटिंग एट होम, because things are not in your control, it becomes more challenging. When you just Right. wait for a okay call, it becomes more challenging. So hats off to all the Fauji wives. It was equally challenging for me, but despite all these challenges, just being like a true Fauji, again I overcame everything, because there is a very famous quote in Fauj, आप फौज छोड़ देते हो, फौज आपको कभी नहीं छोड़ती है, ये आपके साथ हमेशा रहती है. तो इट स्टेड विद मी. So after coming back from there also, again, yes, it wasn't easy, but मुझे ऐसे लगता है we have to take decisions in our life. Then I completed my MBA. I came back to, my passion of teaching again. I started teaching in Delhi University. Side by side, I enrolled myself for my PhD also. I wanted to complete that also. And I think this was a transition of me, but ये मेरे लिए challenging से ज़्यादा rewarding था. Hmm. Because again, I was back. I always loved teaching. I am a daughter of a teacher and a coach, so those skills were there with me. So Hmm. because in this, at this stage, I had, the I got an opportunity actually to explore my passion. And staying with the young crowd always keeps you more enthusiastic about life. So it was very good for me. Again, फिर I started going back to the rural areas. और अगर whenever I go to डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई गेट फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स इज ओवरवेलमिंग. तो शायद यही प्यार और इज्जत है जिसने मुझे कभी फौज को मिस होने नहीं दिया. बिकॉज फौज के अंदर भी, फौज बिकम्स अ वे ऑफ योर लाइफ. इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स नॉट अबाउट योर प्रोफेशन. एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन आर्मी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन. ऑल्सो यू आस्क एनी फौजी हाउ मच यू आर अर्निंग, दे विल टेल यू आई एम अर्निंग 100 सल्यूट्स इन अ डे. सो यू इफ आस्क अ टीचर हाउ मच यू आर Hmm. अर्निंग, द काइंड 100 मैसेजेस इन, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत. और मैं सच कह रही हूँ, the most rewarding thing, if you ask me, is after my class or after my session, when I see young girls and boys smiling, when I see dreams in their eyes, and more important, the courage to fulfill those dreams. उन सपनों को पूरा करने का जो हौसला दिखता है उनके अंदर, दैट इज Hmm. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है. किसी द आप कितनी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हो. सो एज अ टीचर आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. आई एम गिविंग होप टू सो मेनी स्टूडेंट्स. एंड और जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, वट एवर लिटल आई नो, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद माई स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट वन डायरेक्शन. और जब आपको एक होप मिलती है, उम्मीद मिलती है और डायरेक्शन मिलती है, तो आई थिंक जिंदगी थोड़ी आसान लगने लग जाती है. एंड आई एम दैट लकी सोल, बिकॉज माई स्टूडेंट्स लव मी फॉर वॉट आई लव डूइंग. So Right. that's the beauty of this profession for me. You're being very humble and very modest. I think that's what life is all about. Ma'am, you have been an army officer, a life coach, a trainer, a researcher, sports psychologist, and SSB mentor. What is left now, right? After playing so many roles you have already played in your life, what has been your mantra to balance all these roles? I'll not say it's only one mantra which is going to help you. Right. There are two, three things which you really need to always, focus रहना बहुत जरूरी है उन पे. You let it be in your conscious mind always. First thing, I always know that I'm not going to get everything in my life. That's there. Hmm. I know so many people who are doing professionally well in their life. You ask them, they must have compromised on their personal life. And people who are doing Hmm. wonderfully well in their personal life must have compromised in their professional life. में कोई भी चीज सही या गलत नहीं है. It completely depends upon an individual and his priorities and the kind of happiness he's getting from which role. So if you are getting that happiness
फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्लीज गो अहेड विद दैट। मैं हमेशा ये सोचती हूँ। और अगर वो खुशी प्रोफेशन से मिल रही है, प्लीज गो अहेड विद दैट। दोनों चीजें जो साइड में बचती है वो मैनेज हो जाती है, बशर्ते हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। So everything in my life have come from my priorities, and priorities keep changing in my life. When I was young as an officer, wearing that uniform, always into sports, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स में बचपन से खेलते आए, करियर ओरिएंटेड गर्ल, बेस्ट ऑलराउंडर गर्ल, my priorities were different at that time. But when Nirbhay was born, immediately my priorities got changed. उस टाइम पे हम्म। उनके अंदर फोकस चेंज होता है, एंड यू रियली नीड टू टेक डिसीजंस एट टाइम। समटाइम्स डिसीजंस माइट बी राइट, समटाइम डिसीजंस माइट बी रॉन्ग। नीड नॉट टू वरी ऑन दैट। आई थिंक गलत डिसीजंस को ठीक करना आसान है, rather than living a life in regret all the day कि I didn't even try also. So whatever decisions I have taken in my life, sometimes they were right, sometimes yes, they were challenging, but I have given my heart and soul to that. I have tried my level best to make the best of that. मेरे से खुद से नहीं हुआ है, आई हैव आस्क्ड फॉर सपोर्ट। मुझे डर नहीं लगा मदद मांगने में, बीट विद फ्रॉम माय पेरेंट्स, बीट फ्रॉम माय फैमिली, बीट फ्रॉम माय फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत सीखा है कि जिंदगी में जब चीजें खुद से नहीं हो पाती, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई फॉरगॉट, यू नो आफ्टर लिविंग फॉर्ज, इमीडिएटली प्रदीप की फील्ड पोस्टिंग आ जाती है मेरे हस्बैंड की, एंड आई वाज ऑल अलोन। इंडिपेंडेंट गर्ल जो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, बिकेम सो डिपेंडेंट ऑल टुगेदर विद अ यंग चाइल्ड, 1.5, यू कुड नॉट। मैं अपना करियर दोबारा स्टार्ट नहीं, आई आस्क्ड हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड वेरी होल हार्टेडली दे हेल्प्ड मी विद दैट। प्रॉब्लम्स होती है, बट एवरीथिंग इज मैनेजेबल अगर आप मदद मांगो। बहुत बार हम अपनी झिझक में नहीं मांग पाते। Second, my life mantra was always, Himanshu, we all have 24 hours in a day. What we are going to, do in those 24 hours going to make all the difference. मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपना अलार्म स्नूज नहीं किया है। That's So amazing. That's yeah, amazing. for me, my time is very precious. So whatever time I have, I give it. मुझे ऐसे लगता है I should be giving. तभी as a mother, I'm able to give time to my child. I think the most important thing giving to your child is your time. My day starts at 4:30, taking my son for his tennis classes. 5 o'clock, 5 से 7 tennis. वापस आओ, change करो, teach करो, go back to your university, teach them, come back. Nirvay comes back. बैठो उसके साथ lunch करो, again take him to for his tennis classes, come back. So, devoting time is very also important. And I always remember, कोई भी role हो, अगर उसको पूरी शिद्दत से करोगे, आई थिंक सब चीजें ठीक हो जाती है। सो ट्राई टू मेक द Hmm. बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज थिंग्स सिंप्लीफाई लाइफ, and at the end we are all human beings, and I'm not a perfectionist. I do make mistake, I do forgive myself, I do tell yaar galti hogi, chalo aage badhte hain. So I'm not too harsh on myself. I do things which gives me the ultimate happiness. If it's my family, I do give time to that. Sometimes for that I have to compromise on something else, and I don't regret that. तो मुझे ऐसे लगता है. So I think being a human also, my emotions are my power. I'm a very expressive person. फाइन। सो Right. मैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में नहीं घबराती हूँ, किसी को कहने में नहीं घबराती हूँ, बताने में नहीं घबराती हूँ। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल अराउंड मी, विच ऑलवेज मोटिवेट्स मी। Absolutely. मैं हर चीज कर पा रही हूँ उन लोगों की मदद से। Absolutely, ma'am. Absolutely. And whatever you're doing amazing. आई होप सो। जस्ट राइट। राइट। तो मैम इतनी सारी बातें जो हमने अभी करी, उसमें जो एक निष्कर्ष भी जो निकलता है, एक तरीके से एक पॉइंट, सारा निष्कर्ष तो नहीं कहेंगे, एक पॉइंट जो निकलता है वो ये निकलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू वेरी मेक ट्रू। चॉइसेस। तो मैम, यस। आपने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया? ऐसी कोई एक चीज, दो चीज जो आपको याद हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की थी? क्या खोया, क्या पाया? मैं सच बताऊं हिमांशु, आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन खोया। मतलब ना, हम्म। मैंने लाइफ में ना सीखा है, पाया क्या। हम्म। बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ के अंदर पाया, इफ आई फोकस, बिकॉज
कुछ भी बोलो, after reading psychology, after studying psychology, I just want to apply it in my life. Fine. अगर आप खोने की बात करो तो biggest failure which I tell is I always wanted to become a pilot. Okay. So that And was my dream, you जो tried नहीं for it? पूरा हो पाया. Yeah, I tried for it. I cleared my PABT, but I could not clear my SSB. And वो मेरे पास एक ही attempt था देने का. So Okay. that was the most shattering period of my time. I think 1, 2, 3 महीने मुझे लगे उससे निकलने में, because मैंने कुछ और प्लान ही नहीं किया था उसके बाद. Hmm. But that's a big lesson in my life, because next time when I was going for my SSB for army, I was very clear. If not this, I am going to complete my PhD. मेरा net already qualified था. I had my options. And I realized that अगर, you know, आप हार्डवर्क किसी भी एरिया में करोगे तो रास्ते खुलते चले जाते हैं. देयर इज Hmm. नो डाउट इन दैट. आई Hmm. हैव लर्नड फ्रॉम दैट फेलियर कि यू नो ये जो लाइफ है ना, ये डेस्टिनी है ना. मतलब अगर आपकी तरह से नहीं जा रही, किसी भी डायरेक्शन से जा रही है, इट विल टेक यू टू द फाइनल योर डेस्टिनेशन. डरने की Destination. जरूरत नहीं है. यू जस्ट शुड हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ. और हार्डवर्क से नहीं डरना चाहिए. और हार्डवर्क ज्यादा बड़ी चीज नहीं. आई कीप टेलिंग टू ऑल माय स्टूडेंट, थोड़ा एक्स्ट्रा जागना, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना. और जब आप ये करने लगते हो तो देखते हैं कि हम सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं. और सेल्फ इंप्रूवमेंट से बड़ी कोई एडिक्शन नहीं है. और जब ये एडिक्शन हो जाती है ना, so you just keep growing in your life, and learning is a never ending process. I think that's what have always motivated me. तो पाया क्या, मेरे अंदर वो जज्बा आ गया वो खोने से, कि अब Hmm. मुझे, you know, I have to keep learning. And success is a continuous journey. एक के बाद रुकती नहीं है. What next, what next, what next. So Right. I'm still learning a lot. So जितना सीखती हूँ उसको कोशिश करती हूँ शेयर करने की. That's what I'm doing it. Amazing. So on that note, any message that you'd like to give to our audience? So for your audience, first thing, life, you know, face all your challenges head on. You know, just like ups and downs on ECG machine, life has its own highs and lows. And that's the only thing what's making life interested. अगर आपके पास, if you have anything which you are passionate about, please hold on to it. जो ये आपका पैशन है, दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू द डिटर्मिनेशन. और आप देखना एक दिन आप, मतलब बनने की कोशिश मत कीजिए, काम करने की कोशिश कीजिए. दिस इज व्हाट आई लव डूइंग इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क. आप देखना अपने आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे. आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक स्पेशल मैसेज रूरल गर्ल्स के लिए जो हरियाणा से हैं या और भी यूपी, जो भी अपना एरियाज हैं, इनफैक्ट and for entire India, believe in your potential, please. Dream big and please keep pursuing your dreams with all your heart. मैं सच कह रही हूँ, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, to live a fulfilling and purposeful life, you only need education, determination and resilience. और इन 3 सुपर पावर्स के साथ आप कोई भी पॉसिबिलिटी को अनलॉक कर सकते हो. Always please remember, girls, you know, your background is not going to decide your destiny. What is going to decide your destiny is your aspirations and your actions. That is going to shape your future. Please dare to dream, work hard, and never ever underestimate that power which you hold within you. Please do that. On that, That's amazing, whatever you have said, it's highly motivational. इसको सुनने के बाद तो मजा ही आ गया. Genuinely, I man. hope. Like, genuinely. नहीं. Thank you so much. Thank you so much for joining us today and taking out time. We wish you all the very best. We'll always be connected for more updates and more things coming in from your end. And you have a My wonderful day ahead. Thank you so much, Himanshu, and all the best. And stay happy and keep smiling always. And Thank, lots of love and blessings to you, please. thank you, man. Thank you so Thank much. you so much. Bye bye. Take care. Bye Bye bye. Take bye. care. Bye bye.